sit, not listening out. Don't take it otherwise. I'm just thinking that my students are sitting here. The way I'm teaching in the class, just I'm talking to you. So when we're talking, within few years, we will see a cyber war. किसी भी कंट्री की आपको इकोनॉमी गिरानी है, हमें इसलिए भी है ना, मेरे भर्ती कार्ड भी है ना, ये सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, ये केवल सारी मशीन लेके बैठ जाएंगे। सॉरी यार, आजकल नहाने के लिए पानी चाहिए होता है ना, उसके लिए मोटर चलाता था, नहा भी नहीं पाओ अगर सिटी में हो तो, अगर गाँव में हो तो नहीं होते। So now coming back to cyber means if you want to, अगर आप किसी की भी इकोनॉमी गिरानी है तो कुछ नहीं, सिर्फ पावर कट कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए कट कर दीजिए। अगर एक दिनों में कट कर दीजिए तो सी हाउ ड्रास्टिक द इकोनॉमी विल गो डाउन, क्योंकि सब शट डाउन। एक तो सर ये दूसरा है मेडिकल में कि वॉर कुछ नहीं होगी। I will take my words back if I am wrong. It is not good yet. ये 2020-21 में हुआ था कोरोना वायरस, हो सकता है कि वो कहीं से आया हो, चाइना से आया, बस इनके इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन, हाँ भैया जाओ इंडिया में घुस जाओ। लॉकडाउन इतना ड्रास्टिक चेंजेस आए थे इकोनॉमी में भी, और जो जितने लोग मरे थे, आई एम नॉट काउंटिंग हर इंसान की एक आदमी मर रहा है तो उसकी जान की कीमत है, बट आई एम नॉट टॉकिंग, बट सी द इकोनॉमी हाउ 2021 में कैसे मैनेज किया हम लोग लॉकडाउन से। सो ये जो दो वॉर होगी ना फ्यूचर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर वर्किंग इन cyber security of the grid. Very easily, if I want to say, sir, would like अगर वो तो देनी तो अच्छा, स्लाइडर आने से पहले हम वैसे बात कर लेते हैं। क्या बात है यार, मैं भूल गया। 2020 में ही मोदी जी ने कहा था कि 5 मिनट में अपनी लाइट को शट डाउन करो। बिल वाले मैकेनिकल वाले हंस रहे होंगे, कितना आसान है ना, गए और स्विच को बंद कर दें। इट्स सो इजी फॉर देम, so easy for mechanical engineers, so easy for others, and very easy for electrical also. स्विच को बंद करना है, टाइम क्या है, XYZ टाइम पे आपको पूरी लाइट बंद कर देनी है, यही तो बात। फिर कैन यू इमेजिन अगर पूरे इंडिया में एक ही समय पे सारा शटडाउन हो जाए, क्या हो? अभी हमने बोला ना कि 1 नेशन 1 फ्रीक्वेंसी 1 ग्रिड 50 हर्ट्ज। ये ग्रिड का मतलब बेटा होता है कि दिल्ली का जो पावर प्लांट, पुरी का पावर प्लांट, बगीहाल पावर प्लांट, सराल हाइड्रो पावर प्लांट, एनटीपीसी ऊंचाहार, एनटीपीसी रिहान, एनटीपीसी शक्तिनगर, ये सब एक साथ कनेक्टेड है, सब नेटवर्क पे। मोबाइल वाला की बेटा ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल में बस सिस्टम, तो बस सिस्टम सब स्टेशन है जहाँ पे लाइन आके टर्मिनेट होती है, वहाँ से होती है। तो अगर एक समय पे अगर हम सारा लोड शट डाउन कर देंगे तो क्या होगा, कि जो सिंक्रोनस जनरेटर घूम रहे हैं वो अपनी सिंक्रोनिज्म वो बैठेंगे, क्योंकि द बैलेंस इक्वेशन इट मींस द जनरेशन शुड ऑलवेज सैटिस्फाई लोड एंड लॉसेस। लॉसेस कहाँ होते हैं, अब हाई करंट फ्लो कर रहा है वायर पे, हाई स्लैब लॉस तो होगी। तो अगर एक समय पे सारी चीजों का आप बंद कर दोगे तो जनरेशन एकदम लोड एकदम नीचे गिरेगा, और जनरेशन ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, अब जनरेशन ज्यादा है लोड एकदम कम है, तो फ्रीक्वेंसी कहां भागेगी, इट विल गो अप more than 50 hertz, and the tolerance that we have as per Indian standard not more than 3% or 5%. इसके ऊपर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएशन हुआ, जितने भी सिंक्रोनस जनरेटर कहाँ लगे हुए हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यही जाने। आपका पूरे जेएनके का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है भाई, इलेक्ट्रिकल वाले बताओ, हैं? सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट इन जेएनके बगीहाल,
कितना मेगावाट 950, करेक्ट। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। 21 हाइड्रो पावर प्लांट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, जिसमें सबसे बड़ा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आपके पास जेकेपीडीसी वो है 150 की 6 यूनिट्स, 3 यूनिट नहीं बनी है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर जनरेशन को तो दे रहा है और अगर लोड ही नहीं है तो जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो और तेजी से घूमेगा, और जब तेजी से घूमेगा वो अपनी सिंक्रोनाइजेशन खो देगा और उसका शाफ्ट भी टूट सकता है। और जनरेटर बड़ा कितनी बड़ा होता है मालूम बेटा? जनरेटर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा एक कमरा है ना, इतना बड़ा सिंक्रोनस जनरेटर हम लोग उसके अंदर घुसे थे, फिटनेस को समझ लिया है इतना बड़ा सिंक्रोनस जनरेटर, जैसे कि वो alien time comes from the you see how big and the turbine which is rotating, so frequencies have to be same. So what is happening, जब उन्होंने कहा था कि कंसर क्वांटम देते, जब उन्होंने कहा था कि स्विच ऑफ कर दीजिए, तो हमारे जो आरएलडीसी रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर क्या करते हैं भाई? करते हैं बैलेंस सिचुएशन को मेंटेन करना, कितनी यूजर फ्रेंडली है, कितनी ना फ्रेंडली है, कितनी इमरजेंसी है। तो लोड कम हो रहा है तो लाइन जो मूली आई है ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच। So I will show you a small game. तो ये हमारे ग्रैंडफादर के जमाने का पावर सिस्टम हुआ करता था। That is यहाँ पे कहीं GCT लिखा होगा, GCT का लिखा है क्या? हाँ ये तो GCT। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में चेंज ही नहीं की, काफी समय हो गया ये स्लाइड। अब मैं अगली बार आऊंगा तो YCET कर दूंगा, सॉरी मैंने देखा ही। तो this is our old power system, but when we are talking about a new power system, इसका कंट्रोल L करेंगे क्या सर? कंट्रोल L करेंगे, हाँ कंट्रोल L। तो अब इस स्क्रीन पे आ गया। तो this is our modern power system, and what is a modern power system? अच्छा, let me explain you in this way. कोई भी चीज स्मार्ट और मॉडर्न कैसे बनती है? मुझे इस क्लासरूम को स्मार्ट बनाना है। सर आप बात कर सकते हो, आप बड़े हैं। कोई भी सिस्टम को मॉडर्न और स्मार्ट बनाना है तो कैसे कर सकते हो? कोई भी सिस्टम को अगर आपको स्मार्ट बनाना है तो एक चीज याद रखना बेटा, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे कोई भी सेक्शन हो, देयर शुड ऑलवेज बी अ टू वे कम्युनिकेशन। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ अगर उधर से क्वेश्चन नहीं आया ना, आया एग्जाम दिया कराया, but when the question is fired from that side and I am replying, it means you are getting something and you are not able to understand something. Input, output, this is the way to make the response. So that if you will see from here, and the arrows if you will see, they all are two-way arrows. दोनों साइड arrow, bi-directional. एक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, कंज्यूमर, कंज्यूमर, एक्सचेंज, सब आपस में कनेक्टेड है। This will make us to smart. Some characteristics of modern power system in India. आप जानते हो बेटा कि इंडिया की जो एरिया है वो तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सबसे तेजी से क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन। अब जगह तो नहीं बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है। पहले हमारे ऐसे नहीं हुआ करता। When I was small like you, I don't have AC. My father can't, here. Now I have 3 ACs in separate rooms. उसी घर के अंदर, उसी घर में जो पिताजी ने बनाया, उसी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज। पहले कार नहीं हुआ करती थी, आप 3 कार खरीदो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं क्या? लैंड इंक्रीज हुई क्या? तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ रही है, जिसके कारण हम और नीचे जा रहे हैं। आगे तो कल चीजें बढ़ेगी, तभी मोदी साहब ने कहा ना, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इनटू अ पावर सिस्टम। दैट्स व्हाई रिन्यूएबल आ गया,
देन विंड, जेएनके में विंड का पॉसिबिलिटी नहीं है। आई हैव गॉन टू टेस्ट यस हमने कितनी जगह हां उनका बोला उन्होंने बोल दिया हमें कि उनका बोलेंगे हो दैट बट उनका रिसर्च ये उनका लगा देगा सो कॉस्ट इतना बिल्कुल तक हम सोच सकते हैं उसमें वो देखिए सर देखिए अगर जेएनके की अगर बात करें जेएनके की अगर बात करें तो 7-8 स्टेट्स की एनालिसिस की डाटा भी है मेरे पास, लेकिन जेएनके की जो एवरेज स्पीड है एट पर माय नॉलेज वो है सर 4 मीटर पर सेकंड, 4 to 5 मीटर पर सेकंड। जेएनके की जो स्पीड विंड स्पीड 5 मीटर पर सेकंड या 6 मीटर पर सेकंड है, मैक्सिमम 6 मीटर पर सेकंड है। और जहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो एरिया है रियासी कटरा के पास, और जहां पे कंपनी आई थी जिसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एनएचपीसी और उस कंपनी के बीच में कुछ हड़ास हुई जिसके कारण वो प्रोजेक्ट डाउन हो गया। अब आप बात करते हैं कि कैपिटल कॉस्ट सर आजकल तो एसएससी टरबाइन्स विंड टरबाइन्स आ गई हैं, हाइड्रो टरबाइन विंड टरबाइन, and you will say in the European country they are putting the flats type turbines on the yes private type on the highways। देखिए इधर वाली गाड़ी ऐसे जाएगी, इधर वाली गाड़ी ऐसे जाएगी, तो वो हमेशा ऐसे ही घूमता रहेगा, दो प्रेशर गैस। तो now we have a technology and when we have DFIG doubly fitted induction generator, we have permanent magnet synchronous generators, these are the big one जैसे कि साउथ में भी लगे हुए हैं, मैक्सिमम DFIG है, परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन आजकल माइक्रो टरबाइन्स भी आ गई हैं। Now it is feasible that we can do it। Yes, so now not going into more detail, these are some smart grid technologies points here please। I missed out over there when you were saying that 5 मिनट के लिए तो खत्म कर दिया नहीं बोलूंगा मैंने बोला था सॉरी हट जाइए, आई विल रिप्लाई, थैंक यू सो मच। क्योंकि यही सुन रही बाकी सब ऐसे ही है। मैंने बोला था कि जब मोदी जी ने कहा था 5 मिनट बंद कर दूंगा लाइट, तो हम लोग तो कुछ नहीं, शायद दीपावली का समय था या किसी नियर बाय समय था मुझे याद है, लेकिन जो मैंने भी बताया था कि RLDC रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर जो इंडिया में 5 है, वो मैनेज करते हैं बिजली को कैसे क्या कैसे तो वो क्या करते हैं कि देखिए बेटा एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर का एक स्टेप अप और स्टेप डाउन रैंप होता है। एक सिंक्रोनस ऐसे समझो कि एक इनर्शिया, एक पहिया आपने मोटा सा घुमाया, टरबाइन घूम रही है और एक तेजी से घूम रही है, उसको आप मान लीजिए 500,000 आरपीएम पे घूम जो रही है, उसको दूसरे ही सेकंड पे जब 5 मिनट का 200 आरपीएम पे नहीं ला सकते क्योंकि उसका खुद का एक इनर्शिया है ना। एक जनरेटर है जो कि हैवीएस्ट होने का, जिसका स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं स्टेप अप, उसको स्टार्ट होने में ही अगर वो 200 आरपीएम पे घूम रहा है, आप चाहते हो कि अगले घंटे में लोड बढ़ गया, अरे तू घुमाओ 1000 आरपीएम से घुमाओ, क्या पॉसिबल है क्या? ऐसे सोचो एक मोटा ताजा आदमी है और दौड़ा रहे हो और उसको बोलो कि तेजी से भागो क्योंकि आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तो भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, वो भाग पाएगा लेकिन इट विल टेक सम टाइम। अगर उसमें एनर्जी होगी तो भाग पाएगा, अगर स्टेमिना होगा तो भाग पाएगा। तो इनर्शिया, व्हेन टॉकिंग द इनर्शिया, सो व्हाट द लोड डिस्पैच सेंटर डू, कि आप सिंक्रोनस जनरेटर को बेटा बड़ा आसान है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट, पता नहीं सर थैंक यू, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है कि सिंक्रोनस जनरेटर एक बार अपनी सिंक्रोनाइज होता है ना, वो मैंने देखा है टीपीसी चार में, दीज आर द नॉर्मल कंपनीज, एजीएम बीजीएम बैटरी और साइन करते हैं सर, हम कुछ नहीं करते, लेकिन जब शटडाउन होता है तो खाना पीना भी खो जाते हैं क्योंकि उस सिंक्रोनस जनरेटर को उनको विदिन जितनी जल्दी है उसको लेके आना है, वरना बिलियन ऑफ करोड़ चले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो सिंक्रोनस जनरेटर है, अगर लोड डाउन होगा तो आप सिंक्रोनस, कितना आसान है, अरे बंद कर दो ना, अरे शादी जनरेटर थोड़ी ना है कि बंद कलेवा हो गया बंद कर दिया। दिस इज अ सिंक्रोनस जनरेटर, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू रन दैट इन अ मिनिमम स्पीड, बना रहे। अभी अगर वो 500 मेगावाट जनरेट कर रहा है तो 40 मेगावाट ही दे, लेकिन वो अपने सिंक्रोनाइज ना भूले, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखे, वोल्टेज को मेंटेन करके रखे, और वो सब, अब आप ऐसे समझो कि 4 लोग हाथ पकड़ के दौड़ रहे हैं, ठीक है? अब इमेजिन करो
लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन। पंजाब, हरियाणा, यूपी और जम्मू ले लो, ये चार भाई हाथ पकड़ के दौड़ रहे हैं साथ। लोड बढ़ गया किसका? घट गया किसका? पंजाब का। उसका सिग्नल सेंटर कैसे घूमेगा? ये घूमेगा। और बाकी तीनों कैसे घूम दौड़ रहे हैं? ये दौड़ रहे हैं। तो जिन्होंने हाथ पकड़ के उसका रखा हुआ है, या तो उसका हाथ टूटेगा, या तो उसको तोड़ के जाएगा वो बाहर, या तो उसको घसीटता हुआ लेके जाएगा, बाकी के तीन, या तो छोड़ के चला जाएगा। ऑप्शन ये है कि तो छोड़ो तो आगे बढ़ो। और जो ये छूट गया है ना, अब इसको वापस लाने में, एंड दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। And when we are talking about the synchronization of the synchronous generator with a grid, we have to take care of the phase angle, we have to take care of the voltage, and we have to take care of the तीनों को मेजर करते हैं। और जैसे ही तीनों एक लाइन पे आते हैं, हम स्विच को ऑन कर देते हैं और वो बंदा उसी स्पीड से उधर भागेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होंगे, आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश हिंदी बोथ नो, मतलब कभी आता है हिंदी इंग्लिश। तो when we talking synchronous, बेटा आपने लैब में किया होगा इलेक्ट्रिकल वाले, अगर नहीं किया तो गलत बात है। आप बच्चों को मेरे पास लेके आइए, लैब में हम कराएंगे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द टू सिंक्रोनस जनरेटर। वी हैव इन आईटी जम्मू 3 सेटअप्स। हम ग्रिड के साथ नहीं करते, क्योंकि ग्रिड में अगर करेंगे और बच्चों ने गलत सा कनेक्ट कर दिया तो ग्रिड चली जाएगी, तो दैट इज हमको आउट। तो हम क्या करते हैं, दो सिंक्रोनस जनरेटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, एंड दैट वी हैव सिस्टम दैट वी हैव। तो नाउ आई विल लेट यू आंसर। ये जो लोड इंजीनियर्स बैठे हुए हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि पंजाब पर लोड गिर रहा है, तो जितने भी घर के हैं उनका जनरेशन डाउन करो। उधर का लोड बढ़ रहा है, इधर का लोड जनरेशन अप करो। यस, दिस प्लान आपको बैलेंस बना के रखना है। तो वो लोग एकदम आंखें गड़ा के बैठे हुए हैं। अगर आप जैसा इंजीनियर बैठा हो और सो जाए ना, तो नाश कर देगा। एग्जांपल है, तो टेक इट अदर वे। एंड जस्ट अब to make life easy, we have to do that. So what I'm trying to say, you understand? Power balance equation. Total generation should be equal to total load plus losses. That match in the dispatch. और dispatch का एक काम और करता है कि जैसे जनके है, जम्मू कश्मीर स्टेट बिजली खरीदता है, तो एक दिन पहले ही सब डाल देता है। वो लोड डिस्पैच सेंटर आपका जो नरवाल पे है, वहाँ पे जो डिस्पैच सेंटर है आपका, वो सारी हरकतें कर रहा है। कितनी बिजली कितने को खरीदनी है, कल का लोड क्या होगा, तो बैठ आप काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी होगा, लेकिन समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम ये विजुअलाइजेशन में आ जाते हैं। हम आपको मशीन में फेड तो नहीं डाल सकते, जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपका दिमाग भी उसी तरह चलना चाहिए कि वाइंडिंग ये है, ये है, ये है। अगर वो आपने प्रोफेसर की थिंकिंग को सिंक्रोनाइज कर लिया, बुक को सिंक्रोनाइज कर लिया, देन यू विल गेट तो अब ये सब ऐसे ही है बेटा। ये सब जैसे कि ये देखिए, ये है डिस्पैच सेंटर। और जब आप नरवाल में जाएंगे ना, तो आपको ऐसा ही दिखेगा डिस्पैच सेंटर। पूरी बड़ी सी स्क्रीन पे चल रही होगी क्या है, कल का, आज का, 1 घंटे का, 15 मिनट का, 15 मिनट की हुई। और ये कुछ आरटीयूज होते हैं, रिमोट टर्मिनल यूनिट, जहां से डाटा आता है, एंड सब सेंसिंग डिवाइसेस बनी होती हैं। आई विल एक्सप्लेन। और आज का जो पावर सिस्टम है वो क्लोज लूप है। दैट्स व्हाई नाउ आप लोगों ने पढ़ा, हमने पढ़ा था पावर सिस्टम, अब हो गया पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल। पावर सिस्टम अब पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल भी आ गया उसमें, क्योंकि ऑटोमेशन हो चुका है पावर सिस्टम का, सब चीजें इन्फॉर्म हो रही है एक दूसरे को। नेगेटिव पॉइंट। सो दीस आर सम सेंसिंग यूनिट्स, पीएमयूज, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। यू नो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर देखिएगा बात कौन था? अरे ऐसे ही कौन था? हाथ खड़ा कर दो, शर्माना नहीं है। मैं है शर्मा। अच्छा बेटा, दूसरा क्या है ना कि शर्माना नहीं आता, नहीं आता, आता। हम कौन से दोस्त रहते हैं, हमको यह चीज नहीं आती। अभी ऐसा क्वेश्चन पूछने को होता है, नहीं आता होगा, नहीं आता है तो आई विल रिप्लाई। इसमें क्या दिक्कत है?
तो थोड़ी ना आप थोड़ी ना नहीं आता है। तो सीटीपीटी क्या करता है आप बताइए मैडम, आप अपनी बात करें। करंट ट्रांसफार्मर और क्या होता है? बेटा एक 1200 केवी की लाइन आ रही है महाराष्ट्र में, कमीशन हो गई है 800 करोड़ की। एंड फील प्राउड कि इंडिया the country है that is transmitting the highest voltage all over the world। तो ये 1200 केवी की ट्रांसमिशन लाइन जो कि कमीशन करी है ग्रिड इंडिया ने वर्धमान टू औरंगाबाद 800 करोड़ की। तो 1200 केवी अगर मैं आपसे कहूं जब मेजर करो कैसे मेजर करोगे? पीटी तो 1200 को कन्वर्ट कर देगा 414 में 415 में 3 में वोल्ट मीटर लगाओगे मेजर हो जाएगा। सीटी 600 एम्पियर 600 एम्पियर अरे गलती से भी ब्रेक पे आ रहा है ना तो बात बढ़ रहा है कहां गया होगा पता नहीं। तो जहां पे इतना वोल्टेज आ रहा है दैट विल स्टेप अप स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप स्टेप डाउन। अब जो करंट ट्रांसफार्मर तो करंट को अप डाउन करेगा तब रेशियो वोल्टेज है करेक्ट। तो let me tell you what we are doing. These are some blackouts that was happening. इसके का blackout दिखाते हैं। ये जो blackout हुआ था 2012 में, we were sitting in IT कानपुर सर और लाइट गई 15 मिनट के लिए। हम लोग लैब में बैठे थे, कुछ कांड हुआ है क्योंकि IT कानपुर में लाइट आती ही नहीं, क्योंकि सीधे पनकी पावर प्लांट से उसकी ग्रिड थी। अगर पनकी पावर प्लांट बैठा है तो लाइट जाएगी सीधे। पता चला कि ब्लैकआउट हुआ है। इसमें हमारा कौन सा रीजन? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। नेक्स्ट कुछ दिनों तक ब्लैकआउट, जो लोग जहाँ थे वही रह गए, ट्रेन वाले वही रुक गए, फ्लाइट वही एयरपोर्ट तक बैठ गए। और ये कितना आसान है कह देना अरे सर ब्लैकआउट भी तो हुआ था। When I was there in US in 2017, when I was teaching a class and the topic came to RISET blackout था इंडिया। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, ब्लैकआउट हुआ कैसे? बड़ी क्वेश्चन। तो ये यूक्रेन का भी था, यूक्रेन में भी जो हुआ था ब्लैकआउट दैट इज नॉट अ डील साइबर फिजिकल। दिस इज अ टेस्ट बेड दैट वी हैव क्रिएटेड इन ट्रांसमिशन लाइन। यू यूज लेजर मेजरमेंट यूनिट बेटर प्रोटेक्शन रिले। अब ये भाई साहब बैठे हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन को उड़ा दिए। कैसे उड़ाएंगे? पहले तो जम्मू में घुसेंगे, और कैसे घुसेंगे? हमारा सब इंटरनल इंटरनेट है, तो गलती से रिपोर्ट खुला रह गया इसमें घुसेंगे। उसके बाद देखेंगे प्लस ऐसी लैब में सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको उड़ाता हूँ ताकि ये सॉल्व करते करते इनका 2-3 दिन लगे। तो सी हाउ वी कैन परफॉर्म द साइबर अटैक्स। और साइबर अटैक्स मतलब है आज तो सारा ऑटोमेशन में बेटा सब इंटरनेट पे है, इंटरनेट पे है। तो जो डाटा पैनल लगा हुआ है उसको आपको मैनिपुलेट करना है, गलत डाटा भेजना है, कोई ट्रांसमिशन लाइन डाउन करनी है। तो ये जो बेटा हम लोगों ने डिजाइन किया था ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। ये कुछ ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो इन मोर डिटेल्स। ये आगे चलते हैं। हाँ अब ये अभी हमने ये बनाया बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन का आपको समझ आएगा। जस्ट सर आई विल टेक ओनली 5 more minutes। अब ये जो बेटा है ना दिस इज पूरा दिस इज सब स्टेशन। ये मान के चलिए दिस इज अ सब स्टेशन। ये बस वही है, ये पीएलसी लगी हुई है जो लगी रहती है, ये लोड्स है, ये मीटर्स लगे हुए हैं, ये स्काडा सिस्टम है, ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो लोड डिस्पैच सेंटर देख रहा है कितनी जनरेशन हो रही है। और ये आप भी देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम में दे दिया। एक बंदा हैदराबाद में बैठा है, वो देख रहा है कि मैं बॉस हूं, मैं देख रहा हूं हैदराबाद से कितना जनरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। अब आई वांट टू इंटर इनसाइड, दिस इज आईटी एंड दिस इज ओटी। मैं यहाँ से ये जो है यहाँ से मैं अंदर घुसना चाहता हूँ। ये जो मोटर लगी है और ये रेजिस्टिव लोड मैं चाहता हूँ कि ये
आप उड़ा देंगे, यू विल कट इट, बट जो लोड डिस्पैच सेंटर वाला यहाँ बैठा है ना, उसको क्या दिखाई पड़ेगा, सब कुछ सही चल रहा है, रीडिंग्स आएंगी, फ्रीक्वेंसी मेंटेन, वोल्टेज मेंटेन। कैन यू इमेजिन 10-15 मिनट के लिए भी अगर मैं फॉल्ट को डाल दूं, सारे जनरेटर विदिन सेकंड सारे जनरेटर अपनी सिंक्रोनाइजेशन हो बैठेंगे। और जैसे कि ब्लैकआउट जो हुआ था ना, और ब्लैकआउट क्यों हुआ था वो बता देता हूँ। पंजाब, यूपी और हरियाणा में बहस हो रही थी कि इंडिया इज नोन फॉर पॉलिटिक्स, कि लोड शट डाउन करिए क्योंकि मेरे पास जनरेशन नहीं है। तो पंजाब कहता मैं क्यों करूं, आप करो। यूपी कहता मैं क्यों करूं, आप करो। तो आपस में लड़ ही रहे थे कि मैं लोड, क्योंकि भैया लोड काट देते तो जनता चुनाव, तो नोबडी इज एग्रीइंग टू कट द लोड। क्या होता है, बीना की जो लाइन, ट्रांसमिशन लाइन होती है वो ओवरलोड होती है और वो प्रोडक्शन के बाहर चली जाती है। अब बेटा ये सोचो कि दो वायर जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिकल की हो, अगर एक वायर काट दोगे तो इसका लोड किस पे आएगा, उस पे आएगा। तो जब ये लाइन गई तो इसका लोड किस पे शिफ्ट हुआ, उस पे। ओवरलोड आउट, फिर किस पे, उस पे, ओवरलोड आउट। जब तक ये 2-3 लाइन जा रही थी तब तक पता चला कि करंट हो चुका है, तब उन्होंने क्या किया, नॉट ग्रिड को पूरा, इसके कारण ब्लैकआउट हुआ। So this is a test bed that we have generated in IIT Jammu, and I request the organizers if they can come with your students and they can visit. These are some attacks that we have performed. Not here, ये lab में भी हमने perform किया और we have got successful. We have shut down, and this is this is my lab. हर चीज मिलेगी आपको that you can get. और एक लास्ट पे अरुण सर, I will close here. लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सोचिएगा, अगर जवाब नहीं मिलता है तो anup.shukla@itjammu.ac.in। हमारा जो बिजली का बिल आता है तो किसमें आता है, उसकी पावर क्या आती है, यूनिट, हाँ यूनिट की पावर क्या है, किलोवाट आवर। किलोवाट मतलब पी, किलो हटा दो, किलो मतलब 1000, वाट मतलब एक्टिव पावर, VAR मतलब रिएक्टिव पावर, VA मतलब अपरेंट पावर, तो KVAR मतलब रिएक्टिव पावर। तो हमारा जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट में क्यों आता है भाई, पावर तो 3 होती है। अब सोचिए, रात में भी सोचिएगा, दिन में भी सोचिएगा, जहां बैठिए सोचिएगा कि हमारा बिजली का बिल जैसे लेकिन बिजली का बिल तो आप यूनिट में देते हैं ना, वाई किलोवाट आवर, वाई नॉट किलो VAR, वाई नॉट KVA। सर थोड़ा पहुंच गए हैं आधे जवाब में, लेकिन कंजप्शन उसी का क्यों होता है, KVR का नहीं होता है क्या? ये सब आप पहुंच गए हैं, क्योंकि कंजप्शन जिसका होता है उसी का बिल देते हैं। आप आधी दूर पे पहुंच गए हैं, लेकिन अगर KVR का कंजप्शन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, अगर नहीं होता है तो समझा। थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे सर, अगर हम दोबारा आया तो मुझे मालूम होना चाहिए कि बिजली का बिल किलोवाट में क्यों आता है। थैंक यू। In a short duration of time, he has given a lot of inputs. I'm sure his session was quite refreshing. So now, without taking much of your time, I invite our next keynote speaker, Dr. Arun Kumar Verma. He is also from Electrical Department. Laptop करेंगे All leaders, system analysis. पूछना बच्चों, तो जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उनको जरूर सोचना है बिजली का लाएंगे, it will bring our students. बैठिए सर। नीरज खाली 1 मिनट।
मैंने आपको मेल किया मैं आईटी के नेटवर्क पे मैंने आपको मेल कर दिया जैसे ही आपने उस पे क्लिक किया मैं आपको सिस्टम में तो आपको पता भी नहीं चला आपको ऐसा ठीक है स्पैम लेकिन मैं अंदर घुस चुका हूँ आपने तो आईडी घुस गया कहाँ रखा है लेकिन मैं आपके घर में घुस चुका हूँ वर्चुअली अब क्या है ना रिमोट देखिएगा पीएलसी सीबीएसई पीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन पीएलसी एलएसडी की पीएलसी बीएफटी So, Professor Anup Shukla, I mean, he talked about, please listen. So, Professor Anup talked about how we generate the electricity. But anyway, I'll not be confined to the electricity only. We'll talk about all engineering, okay? But that is basically the electrical vehicles only. So, it's a business for all, including mechanical, civil, computer science people, electronics people, all can participate in that. So basically for the electrical vehicle point of view, बहुत फास्ट करनी पड़ेगी आपको 20 मिनट तक लगेगा so basically I'll talk about the electric vehicles. So we started long back in 1830 and 18 like that. And by that time we grown in the technology and we started with upgrade stuff. So we started like particular years starting from so basically first electrical started came in 2006 and then first commercially available electric vehicles came in 2010 and
In 2013, India come out with a national electric mobility mission. The idea was that almost whatever the because the 50% of the vehicle on the road must be the electric vehicle. I didn't convert them. So this was the idea for this national electric mobility mission. And this Nissan Leaf came in 2010, and in 2017 basically people are talking more and more about the electric vehicle. So why we are going for the electric vehicles? So yes, you see this. You are in Jammu and we are having a AQI index of less than 100. Okay? But in Delhi, you have a AQI index of more than 500 also. So this AQI is air quality index, and when this is 0 to 50, this is a good, and satisfactory 50 to 100, and moderate, severe. So when it is severe, it affects the healthy people also. And 14% of this air quality index, or you can see the air pollution received, comes from the electric vehicles. So yes, next. Now, when we say the emission from the electric vehicle, emission from the normal vehicles, it has that greenhouse gas emissions. So when we talk greenhouse gas emissions, are this pure sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, and many such things are. Nitrous oxide. So China is topping the chart with the largest greenhouse gas emitter, followed by US, then we have Russia, and then India. We are there in that chart. So we are among the top greenhouse gas emitter in the world. Professor Sukla was talking about the grids basically. So I'll talk about the category of the grid. We have a high carbon grid, medium high carbon, medium low carbon, and low carbon. So what is high carbon grid? So whenever you are generating the electricity with the help of coal, 100% coal, almost coal you are using basically. So the electricity which is basically generated with the help of coal, that is 93%, 1% natural gas, 7% zero emission. Zero emission is basically your renewable energy. So this is coming the high carbon. Why high carbon? Because already you burn the coal, a lot of gases are emitted in the atmosphere, and then you are generating electricity. High carbon grid. And if you go to the last one, low carbon. Low carbon is you have a mostly electricity generated from the renewable energy. That is basically the low carbon. Next. So when you are charging your electric vehicle with a high carbon grid, this electrical vehicle is as good as your normal vehicle because you can see the emission level. Your this combustion engine based vehicle, they are emitting around 30, and the other electric vehicles they are 11.7, 11.9, like that. Means when you are charging from the high carbon grid, your electric vehicle is also almost similar to your normal vehicle. You need to go back. Yes. Now you see, we are charged with the renewable energy. Okay. So you can see the emission level difference. So the idea is on an electric vehicle, but charging from the renewable energy. Okay. So that's why solar integrated charging systems and all those things are basically advocated. So you can see that this is the emission level from the charging stations. Okay, and this is when you are charging from the renewable energy, or gasoline, or on grid. So these are the emission level, or you can see the air pollution level. Next, you see this one. Last, I think day before yesterday, PM talked about that we should use less oil, petrol, diesel. Okay, so basically you see this one. This is a demand and supply of you can say world demand and production. So between you can see that 1960 to 1970, you can see that the production was high and demand was less. And if you see the further after 230 and 250 like that, so there is a huge gap in the demand and supply. So ultimately we need to fill this gap with the alternative energy source.
or what exactly, if there is no oil, what would be the option basically? Okay. So we need to think about those electric vehicles. Moving further. Next. Now, basically there is a global rise in the temperature. Global rise in the temperature of Earth. So when the Earth temperature rise, there is a ice of the glacier belts, the sea level rise, and when sea level rise, you can just Google the news. The capital of Indonesia, that is Jakarta. So this capital of Indonesia, Jakarta, has a $300 billion plan to just to relocate the capital of Indonesia to somewhere else. Indonesia is basically thousands of islands. Countries having thousands of islands. So this Jakarta is also one of the islands. And they have a $300 billion plan just to relocate the capital of Jakarta somewhere else. Why? Because sea level is rising, and they are threat that it will submerge in the sea. Okay. So why this is because of the global air temperature rise, global earth temperature rise basically. Further. So these are the intergovernmental panel on climate change. We have a Paris Agreement. Okay. So in Paris Agreement, it was decided that we must keep the global air temperature below the pre-industrial level or below 2 degrees Celsius, and just help the other countries in order to fight with the global rise in the temperature. Next. So next. You can see the efficiency level of various vehicles, electric vehicles, fuel cell based vehicles, and this ICET. So you can see the efficiency also. The electric vehicle is 72% efficient. That fuel cell based electric vehicle 40%, and then you see the this engine combustion engine based vehicle that is only 60%. These are the tank to wheel analysis, means oil tank in the vehicle to the wheel analysis. Next. And these are the well wheel. When there is an oil well, we are exploring the oil from there, and then these are the analysis. Here also you can see the electric vehicle is more efficient than the normal combustion engine based vehicle. Next. Now see, we have a very glossy picture of electric vehicles, and they are very good. Pollution free, and so many things are there. But what are the challenges? So these are the challenges basically. How many of you are driving e-scooter or e-car, electric car or electric scooter? Anybody is driving electric scooters? किसी के पास है? जिसने चलाया electric scooter है किसी के पास? चलिए. So electric scooter में क्या है कि see you have a like the range 40 किलोमीटर की रेंज है, 30 किलोमीटर की रेंज है. आप गए सिटी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इजीली you can move and then you can come back. Now let's say I want to go from Jammu to Delhi, around 600 kilometers. So do I have any car or any electric vehicle which can take me to Delhi, then come back in a single charge? No. Not in a single charge I can reach Delhi. Okay. They are coming hardly with a driving range of 200 kilometers or 300 kilometers. Like. So the biggest hurdle is the range anxiety. I don't have a range, that's why I cannot go from my electric vehicle to Delhi. But if within a city, I can travel around 10 kilometers, 5 kilometers, just to stop something and come back to my home. That's fine. Even since 2019, I'm using an electric cycle, electric scooter in my campus. Not here. So driving range is one of the hurdles. Charging time, when you charge electric vehicle, it takes hours. So this is one of the problems that, let's say when I'm going on highway, I don't have so much of time that I can charge it and then I can start my journey. Not like that. Because you don't have so much of time. Safety, you might have heard so many cases of Ola Uber having a fire, or cases with fire, blast and so. So safety, when you don't have a coordinated charging, in that case, this battery is basically acting like. So these are the technical challenges: charging time, battery efficiency, safety. So these are basically technical hurdles. Infrastructure wise, the way we have a petrol pumps on both sides of the highways,
Do we have a charging system similar? No. So this is also in my mind that while traveling, do I find a charger on just like I have a petrol pumps or refilling stations? Do I have a charger installed on the road? No, not like that. Then battery recycling. You know, lead acid battery you can recycle, but to recycle the lithium-ion battery, that's also a difficult task. And the government has given a lot of funding in order to just to develop the technology that we can recycle this lithium-ion battery. Because in electric vehicles, generally we are using lithium-ion batteries, not lead acid, not lead acid battery, because of the driving range, or you can say the power density. Then policy-wise, policy is basically the policy must be friendly, user-friendly, I can say. Maybe some rebate in tax or maybe subsidies, just like that. So policies also having challenge. You must have a kind of policy which will, you can say motivate the EV user. Then the market. Let's say there's some fault in the electric vehicle. Then normal vehicles we have a lot of service stations. You have Maruti, Hyundai, so many service stations nearby. You can go and anytime you can have a reverse and then servicing. But for electric vehicle again, the problem is there. And then after that, their testing, their certifications, their validations. So one more thing is raw material for the batteries. So these are the challenges basically why people are not using more and more electric vehicles. These challenges are divided into technical, infrastructure, policy, and market. All I have just talked about. Next. So, National Electric Mobility Mission came in 2013, and now these are the paths basically available in India with the electric vehicles. Mahindra E-Metro, Tata Tigor, you might have seen all those vehicles basically. Hybrid cars are also there. Next. These are some of the government schemes. That is basically the FAME 1 and FAME 2 just to promote that electric vehicles. So I am not going into the detail of that. This FAME 1 is basically the fast adoption and manufacturing of electric vehicles. FAME 1 and FAME 2 came over there. Then these are the phase 17 to 19, 20, 20, like this. And ultimately, the FAME 1, FAME 2 was just to develop an ecosystem for the manufacturers, so that we can indigenously develop the component of electric vehicle in the house, and then ultimately the dependency on the foreign countries in order to develop those electric vehicle infrastructure must be reduced. You can move on. Next. You can see. So the idea is that we have the all electric vehicles. So we want to reduce the energy consumption by 64%, and then the CO2 emissions, because I told you in the earlier slide that we are in the top 5 greenhouse gas emitter in the world. Okay. So with all these electric vehicles and all adoption, we want that net reduction in the energy utilized 64%, and then CO2 emission by the 30%. This is just of the world top. Next. You can go. Next. Yeah, these are some of the government schemes basically: Make in India, Digital India, FAME, Green Mobility, Smart Cities. So these are basically directly, indirectly contributing to the National Electric Mobility Mission. Yeah. So basically, with electrification, with electric vehicles, basically, we are also seeing the issue of national interest. Okay, that urban pollution, trade tension, because here the vehicular fail basically we have that the import of oil from 90 billion basically in 2017 it was 40 billion, in 2013 it is expected to have a 90 billion of import. So when you are importing that, it affects your economy. So with the electric vehicles, adoption of this National Electric Mobility Mission, we are also going into the Atmanirbhar Bharat. Basically, because once you reduce this import, then only your economy can grow much faster.
And these are the phases of the basically government policies. Time to time they are coming with the next. Yeah. So these are the states you can see. Probably you can find yeah. So basically they are the state specific EV policies. All the states in the country they have this type of policy, demand subsidy, road tax, then charges subsidies, all those things are there. Do we have a discussion on this? No. Okay, next. Now, the way government is tightening the rules across the emission rules. So, every OEM has to follow the EV in their portfolio. Because you can see the emission level was 135 into 150, which has been reduced to 113 in 2022, and then in further you can see less than 90. So that's why all the manufacturers they are coming with, you might have heard mild hybrid, strong hybrid, all those cases. So they are coming with it. Next. Next. So this is basically the per million population, I mean the electric vehicles per million population worldwide. Next. This is the live basically. You can just copy this website and you can anytime you can see that how many vehicles are electric vehicles are there in India, how many fuel they have saved in a one day, in liters, in 1 year, and then how much carbon emission they have saved. So you can track it live. So these are some of the different motors you might have seen in your basic electrical engine. So these are the motors basically required for electric vehicles. Next. 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 These are the battery technologies. Next. Next. Yes. So you see this basically. See these are the different batteries with a driving range. Lead acid battery, nickel cadmium, nickel metal halide, lithium ion. Lithium is the available batteries. Lithium ion batteries having the maximum driving range. Other batteries are in the either in the R&D phase or under development. Next. Now see this. Lithium ion is the prevalent technology right now, but in this list basically Australia, Chile, China, Argentina, Zimbabwe. We don't have India in the list, but thankfully we have some reservoirs of lithium in Riyasi and other districts of Rajasthan, Nagaur. But here you see that we don't have this. In order to, and everything depends upon, see, without battery, your satellite communication, your EV, and whenever you talk about the telecommunication, everything is dependent upon the battery. So, in order to tackle this, India come out with a plan that is Kamil, and it's Videsh India Limited, because they want to suppress the supremacy of China in the region, and they don't want to procure all those lithium from China, and that's why this Kamil, VIS, that is Videsh India Limited was formed. And with this, basically, the motto was just to collaborate with the like-minded countries, ask them for lithium, in return they can give something, or maybe a joint collaboration type in order to search out the lithium reservoir in India itself. So, just to tackle the China supremacy, because you might have heard that how the Israel they are fighting their wars with other countries, in the case that they can do blast and so this why basically the China, we don't want the China to enter in this, or we should have any benefit in China in terms of this lithium ion. You can go further, please. These are most of the battery manufacturers. Next. Okay. So here I would like to stop because I don't want to go in more detail. So whenever we are talking about the electric vehicles, this is a lot of applications are there. Vehicle to grid, public charging infrastructure, then digital infotainment system, power electronics is involved. So these are the technological side of electric vehicles, and this is not only confined to the electric vehicle engineers or you can say electrical engineers only. When we talk about the vehicle to grid, it has a combination of all the engineers. It requires mechanical, civil, electronics, computer science activities there. It's not only for the electric. And if you have any questions regarding this electric battery, current charging profile and all, so please ask your questions if you have any. I would like to stop here. If you have any questions, please ask. Any questions pertaining to this topic? Next question.
We are extremely thankful to Dr. Anup Shukla as well as Dr. Arun for giving insights about the topics, and I assured them both that we will definitely bring our students to your institute so that they can get very updated knowledge. As you people are more into research, and because your IITs are at par, we are lucky to have this IIT in Jammu. All credit goes to our Prime Minister who gave IIT to Jammu. Thank you very much for becoming a part of this third international conference. And I would like to say, all the Jammu people, they are very lucky that the government of India has given all institute in Jammu. Yeah, And definitely. it is the first district. यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, एम्स, वो लगी है। Capital city don't have all these institutes. They have IIT, they have AIMS, but they don't have IIM. So we ट्रिपल are IIT really है। fortunate. आपके पास तो ट्रिपल IIT है। Yeah. सब कुछ ले रखा है आपने। किसी और भी जाने को पूछ लो ना।
हाँ चैनल पे आ रहा है दूसरी वाली है मैं वो कब से देख रहा हूँ यार मेरे को मैसेज दिया तो देख नहीं रहा क्या कर रहा है ये तो पहली वाली कौन सी है ये तो लाइव हाँ तो लाइव की वही है इसको कौन कलर का शर्ट ही तीन जा रहा है साउंड वहाँ आ रही है मुझे यहाँ से कुछ खाना होता है ठीक है
Our chief guest has arrived. He'll shortly be joining us. So please be seated and maintain discipline.
Others, various others.
As we approach the concluding phase of the conference, we now begin with the valedictory function. But before that, it is a moment of great honor and pride as we welcome our distinguished dignitaries for the valedictory function. We are truly privileged to have with us our chief guest, Sri Ravindra Rama, senior leader and executive member of RISET, a firebrand politician, a true son of soil. Known for his visionary leadership, dedicated public service, and commitment to the welfare of society, he has made significant contributions towards the growth and development of the community. He is a member of the Rashtriya Swayamsevak Samiti. He was the last president of BJP J&K State Unit and first president of J&K Union Deputy Unit. He also served as the state president of the party's youth wing, the Bharatiya Janata Yuva Morcha. We feel privileged to have such an eminent personality with us today. Let us welcome our honorable chief guest, Sri Ravindra Rama, with a big round of applause. I extend my heartiest welcome to our respected guest of honor, Dr. Deepak Kumar, a senior officer of Jammu and Kashmir Administrative Service, currently serving as Sub-Divisional Magistrate, Jammu North. He has served as a Deputy Secretary, Skill Development Department and Assistant Commissioner, Relief Organization, Migrant, Jammu. Sir, your gracious I would like to welcome worthy Chairman, YCET, Engineer Vijay Singh Jambal, respected Vice Chairman, YCET, Thakur Shivdev Singh Jambal, Revered Managing Director, YCET, Engineer Renu Mangu, respected keynote speakers, Professor Dr. Anu Shukla, Dean, Student Affairs, IIT Jammu, and Professor Dr. Arun Kumar Verma, Associate Professor, Department of Electrical Engineering, IIT Jammu. Worthy Director, YCET, Professor Dr. Sajeev Singh, Honored Dean Academy, YCET Engineer Dinesh Gupta, respected heads of all departments, faculty members, and the vibrant audience who have taken out their time to be with us today. Your presence makes this event truly special. On the behalf of Yogananda College of Engineering and Technology, I, Bhumi Salaria, and I, Rishika Choudhury, extend a warm and heartfelt welcome to all of you. Now, let us start the valedictory ceremony. It is a moment to reflect on the knowledge shared, the experiences gained, and the connections built throughout this program. As they say, every ending is a new beginning. Take forward the lessons, not just the memories. Hence, the valedictory session makes not just the end, but also the beginning of new ideas and inspirations that we carry forward. As we conclude this beautiful event, we carry forward not just certificates,
but experiences and inspiration. I request everyone to kindly settle down and be a part of this concluding session with the same enthusiasm. जैसा कि कहा गया है, फूल सिर्फ सुंदरता नहीं, सम्मान और स्नेह का संदेश भी देते हैं. So it's time to felicitate our esteemed guests for gracing the occasion today. I may request our worthy chairman, Engineer Vidhi Singh Jamwal, to kindly present a bouquet to our honorable chief guest, Shri Ravindra Banerjee. We are privileged to recognize and celebrate your valuable contribution, sir. कृपया जोरदार तालियों के साथ Now, I request Chairman Sir to kindly present a bouquet to our guest of honor, Dr. Deepak Kumar, JKAS, SGM, Jammu. Now, it's time to present bouquet to our keynote speakers who made this event even more intellectual. I would like to call Professor Dr. Anup Shukla, Dean Student Affairs, IIT Jammu, to kindly receive bouquet from Chairman Sir. Now, I again request Chairman Sir to present bouquet to our next keynote speaker, Professor Dr. Arun Kumar Verma, Associate Professor, Department of Electrical Engineering, IIT Jammu. Thank you, everyone. To begin the valedictory function, I would like to request the organizing chairperson of RISET, Director YCET, Professor Dr. Sanjeev Singh, to kindly grace the podium and share his valuable words with us. Let's welcome him to the stage. Respected Chief Guest, Honorable Ravindra Ji, Senior Leader and National Executive Member of BJP, respected Guest of Honor, Dr. Deepak Kumar, JKS, SDM Jammu, respected Engineer Vidhi Singh Jamwal Ji, Chairman, Yogananda College of Engineering and Technology, from Chief Patron of RISET 2026, respected Dr. Anup Shukla, Dean Student Affairs, IIT Jammu, respected Dr. Arun Kumar Verma, Associate Professor, Electrical Department, IIT Jammu, respected Thakur Shivdev Singh Jamwal Ji, Vice Chairman, Yogananda College of Engineering and Technology, Patron of RISET 2026, respected Engineer Renu Bangu Ma'am, Managing Director, Yogananda College of Engineering and Technology, Patron of RISET 2026, distinguished keynote speakers, session chairs, respected member of Advisory Committee and Editorial Board, dignitaries from academia and industry, sponsors, respected head of departments, faculty members, researchers, scholars, and dear students. Good afternoon and gracious welcome to all of you. It is indeed a matter of immense pride and privilege for me to welcome you to the third International Conference RISET 2026 organized by Yogananda College of Engineering and Technology, Jammu, on the inspiring theme,
research and innovation in science, engineering, and technology. Today, the world is witnessing unprecedented advancement in science, technology, innovation, and research. In this fast-changing environment, conference like RISET 2026 provide an important platform for experts, researchers, and students to share ideas, discuss new technologies, and work together to build a new, better future. Yogananda College of Engineering and Technology, Jammu, was established in 2013 under the aegis of Jammu Group of Educational Institute, a trusted name in education known for academic excellence, discipline, innovation, and holistic development. The Yogananda Group operates two prominent campuses in Jammu. One is Kurku campus, comprises of National College of Education for B.Ed courses affiliated with the University of Jammu, and Cambridge International High Secondary School affiliated with CBSE. Second, one is Potoli campus, comprised of Yogananda College of Engineering and Technology, along with the Institute of Management Sciences. YCET is approved by AICT, Government of India, recognized by Jammu and Kashmir, and affiliated with the University of Jammu. The institute currently offers 4 BTech programs in computer science and engineering, mechanical engineering, electrical engineering, and civil engineering. Over the last 13 years, YCET has produced skilled engineers and responsible citizens contributing significantly in administrative services, the Indian Army, PSUs, national and international companies, banking, entrepreneur, and infrastructure development in India and abroad. Till date, around 2,090 students from 6 successful batches has been awarded engineering degree by the University of Jammu. At YCET, we strongly believe that quality education must be supported by quality infrastructure, skilled faculty members, and continuous innovation. We are proud to have highly qualified and experienced faculty members who actively contribute to research and academics at national as well as international platforms. Yogananda College of Engineering and Technology has achieved remarkable academic recognition in the recent years. In 2020-23, YCET scored 3rd position among all colleges and universities in Jammu and Kashmir and 1st position among private institutions in SWAYAM national ranking. In 2023-24, the college scored 2nd rank in the Union Territory of Jammu and Kashmir under the IIC ranking. In 2024-25, YCET received the Bright Institution Award from the IIT Bombay under the Spoken Tutorial project. Recently, college has become the first institute in Jammu and Kashmir to establish a skill accelerator lab in collaboration with IIT Bombay to promote skill-based education. In association with IIT Delhi, YCET has also established a virtual lab to support practical and simulation-based learning. In addition, YCET has developed advanced technological laboratories including Internet of Things Lab, Internet of Medical Things Lab, Robotics, 3D printing lab. These facilities are helping students to bridge the gap between the theoretical concept and practical innovation. At YCET, we firmly believe that education must extend beyond classroom. Through academic collaboration and MOUs, with reputed organizations such as IIT Bombay, IBM, Tata Technologies, Internshala, ICT Academia, IRB, Adani Cement, and many other students receive valuable opportunity for internship
training, skill enhancement, and industry interaction. Our students have undertaken internship and training program at prestigious organizations including IIT Jammu, IIT Delhi, IIT Roorkee, Maruti Suzuki, Bharat Heavy Electrical Limited, National Highway Authority of India, Jammu Smart City Project. The placement record of YCET continue to reflect our commitment toward employability and career development. Students have been recruited in organizations such as Tech Mahindra, Jindal Steel and Power, Bajaj Motors, Adobe, Flipkart, Blinkit, Myntra, Jampact, and several other national and international companies. I am pleased to share that placement record of the final year student has been highly encouraging. In computer science and engineering, 70% placement, in mechanical engineering, 100% placement, in electrical engineering, 50% placement. In civil engineering, 50% placement till date. We are confident that these numbers will continue to rise in the coming month as more companies are expected to come here. Before I conclude, I once again express my deep gratitude to our honorable chief guest of honor, distinguished dignitaries, keynote speakers, sponsors, and participants for gracing this conference with their esteemed presence. I firmly believe that RISET 2026 will serve as a vibrant platform for intellectual exchange, collaborative research, technological advancement, and academic excellence. I would also like to acknowledge the tireless efforts of the advisory committee members, editorial board members, organizing committee, faculty members, staff members, volunteers, and students whose dedicated and teamwork have made this conference possible. Once again, I warmly welcome you all to Yogananda College of Engineering and Technology, Jammu. I wish RISET 2026 grand success and all participants a highly enriching, productive, and memorable experience. Thank you. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. Now, it's time to have a brief report of the conference proceedings, and for that, I would like to request the Organizing Secretary, RISET 2026, Dean Academics, YCET, Engineer Dinesh Gupta, to kindly come on the podium and share the insight. Thanks, Nishika. Respected Chief Guest of Honor, Conveners, Worthy Chairman, Vice Chairman, Respected Managing Director, Director YCET, Professor Jia Dotra, Keynote Speakers, HODs, faculty members, researchers, and my dear students. As we come to the valedictory session of the third international conference, RISET 2026, it gives me immense satisfaction to present a brief overview of today's proceedings. The conference, organized by Yogananda College of Engineering and Technology, Jammu, in collaboration with Spoken Tutorial and Pyramid Science IIT Bombay, the Electronics Department of the University of Jammu, and Vigyan Parishad Jammu and Kashmir, has been a meaningful academic gathering devoted to emerging technologies in science, engineering, and technology. It is also a matter of great pride that RISET 2026 has constituted a highly distinguished advisory board. The advisory committee not only covers almost all major government and private technical institutions of Jammu and Kashmir, but also includes eminent academicians and researchers from several states of India, such as Punjab, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Haryana, Chandigarh, UP, Madhya Pradesh, etc. Internationally, the advisory board has representation by eminent international experts including Dr. Nasrin Belachiou from Ethiopia,
Dr. Rajendran Anand from China, Dr. Anish Kumar Goel from Canada, Dr. M. Mohammad Saeed Ibrahim and Dr. M. Murugandam from Oman, and Professor Dr. Imade Kufi from Iran. We are pleased to share that the conference has received a very encouraging response from the academic community. A total of 75 research papers were received from different parts of India and abroad. After a rigorous scrutiny and review process, 43 full-length research papers and 12 abstracts poster presentations were finally selected. The selected papers represent contributions from 10 different states across India. In addition, 3 international research papers have been received from United Kingdom, Iran, and Oman, reflecting the growing global research reach of RISET 2026. Today's conference remained highly engaging and academically enriching with a busy schedule of technical deliberations and keynote interactions. We successfully conducted 4 keynote sessions, 2 in online mode and 2 in offline mode. The online keynote sessions were delivered by eminent international experts. One session was delivered by Dr. Anish Kumar Goel, professor at Western Community College, Canada. The second online keynote session was delivered by Professor Dr. Imade Kufi from Iran. The offline keynote sessions were conducted by distinguished faculty members from IIT Jammu. The first session was delivered by Dr. Anup Shukla, Dean Student Affairs, and the second session was delivered by Dr. Arun Kumar Verma, Associate Professor in the Electrical Engineering Department. An important academic highlight of RISET 2026 was the successful conduct of 5 parallel technical sessions. These sessions were efficiently coordinated with the support of faculty members from YCET Jammu and Sri Mata Vaishno Devi University. Researchers, academicians, and scholars presented their work on diverse contemporary themes, leading to vibrant discussions and meaningful exchange of ideas. The participation from institutions across the country as well as from international contributors clearly reflects the growing research culture and collaborative academic spirit that RISET 2026 seeks to promote. I sincerely express my gratitude to all keynote speakers, session chairs, reviewers, faculty coordinators, delegates, research scholars, and students for their valuable contribution in making this conference a success. I am confident that the deliberations and interactions held during RISET 2026 will lead to stronger academic collaborations, innovative ideas, and future research opportunities. In the last but not least, I would like to acknowledge and thank our conference sponsorship partners, Innovation, Shalimar Cattle Feed, Hotel Swastik, Technobyte, and Polyskill Private Limited for their valuable support. We are also grateful to our media partner, JK Update, for extending media support and helping us reach a wider audience. Thank you all. Thank you so much, sir, for great information. Now it's time to hear from a person whose leadership and dedication inspires the community. Let us all put our hands together for Dr. Deepak Kumar, JKAS SDM Jammu North. Sir, kindly grace the podium with your words of wisdom. Evening to all of you. Special thanks to Chairman Shri Singh Jamalji for giving me this honor to be present here and interact with you all in this third International RISET 2026 conference. I see these conferences as an opportunity for different candidates, students, researchers, innovators from different institutes to interact so that the ideas that are incubating in those minds can be got exchanged, and you people know what are the real world problems, because ultimately, as earlier मेरी सर से बात भी हो रही थी, जो इंजीनियर्स मोस्टली आजकल डेवलप हो रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की कमी आ रही है कहीं ना कहीं.
वही पैटर्न वही सेट है, हम उसी को बढ़ रहे हैं, बट ड्यू टू ट्रेमेंडस जो चेंज हो रहा है फील्ड में हर जगह प्रॉब्लम्स डेली जनरेट होती है। आप इनोवेटर्स हैं, इंजीनियर्स के साथ इनोवेट करना है, यू हैव इनोवेट दोस प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो लोग फेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, इंजीनियर से बहुत काम किया भी है, करती भी है, यू गिव थ्रो देम प्रॉब्लम, दे कम विद द सॉल्यूशन। हुआ है आज की डेवलपमेंट हर जगह हुई है, हर चीज हुई है, वो इंजीनियरिंग की देन है। हर एक फील्ड की अपनी अपनी वो है। इंजीनियर्स हैव मल्टीपल ओकेजन्स पे बहुत ज़्यादा उन्होंने रोल रहा है सोसाइटी में डेवलपमेंट में, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। बट ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में यू आर स्टूडेंट, वी आल्सो पार्ट इन दीस कॉन्फ्रेंसेस। इसमें एक मतलब ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ज़्यादा रहता है। आपको क्या, जैसे IITC भी आए हैं, मैंने देखा इंटरनेशनल पेपर्स भी कुछ पब्लिश किए हैं उन्होंने, तो वहाँ का जो उनका एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग देयर, आपको यहाँ जान सकते हैं यहाँ कितने प्रॉब्लम्स हैं वो जान सकते हैं और फिर उन पे इनोवेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेन है। बेसिक प्रॉब्लम्स जो लोग उनकी सफर कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारा, नेचर एंड इकोलॉजी पे बात कर रहे थे, हमारे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कितना सेंसिटिव है। ये इनोवेशंस जो आपकी हो वो उसको मद्देनजर रख के हो कि जो है हमारी इनोवेशंस हैं कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी सस्टेन करें। सो दैट अल्टीमेटली इस एनवायरनमेंट में रहना, इसको डैमेज करके हम कहाँ सस्टेन कर पाएंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट डिफरेंट फील्ड्स की है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसी फील्ड के, AI मशीन लर्निंग के, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो आगे चल रही है। With ever advancement in this field, आप जानते हैं that innovations पहले बहुत सारी देर में रखती थी, टाइम में रखती थी। In the span of 6 months of latest developments, latest ideas दिखेंगे, पुराने भी रहेंगे, तो world has moved forward 6 months में बिल्कुल नया एक लेवल आ जाता है। तो I just wish all of you जो भी हैं अपने आप को एक ही चीज रखें कि अपने आप को अपडेट करें। Knowledge is infinite, learning is continuous. You have to be updated each and every moment of your life. जहाँ आप पीछे रह गए होगा अपने आप को अपडेट रखें। आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट विशेस माय साइड। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now, moving on to one of the most exciting and proud moments of the program, the prize and certificate distribution ceremony. जैसा कि कहा गया है, सफलता का रास्ता मेहनत, धैर्य और विश्वास से होकर जाता है। This segment is dedicated to appreciating the hard work, dedication, and outstanding achievements of our participants. I would like to request our esteemed chief guest, guest of honor, Chairman Sir, and other dignitaries to kindly present the certificates and awards. Now is the time to announce the winners. Let us celebrate their achievements with a big round of applause. The Best Paper Award goes to Mr. Ravinder Singh and Mr. Anirudh Sharma from YCET for the paper titled Federated Learning Based Lightweight Anomaly Detection for Resource Constrained Edge IoT Network. Now, the award in second category, that is Best Poster Award, and the winner is Miss Tini Sani for the poster topic Machine Learning based comparative analysis of facial parameters expected from thermal and visible images for qualitative identification. She is from University of Jammu.
Congratulations to the winners. Keep striving for excellence. Now, we move on to a very special segment of our program, the felicitation ceremony. This is a moment to express our heartfelt gratitude to our esteemed guests for gracing the occasion with their presence. And for that, I would request our chairman sir to kindly come forward and felicitate our chief guests and other dignitaries. First of all, let us present a token of appreciation to our honorable chief guest, Shri Ravinder Rana. Now, our guest of honor, Dr. Deepak Kumar. Sir, it's our privilege to have you with us today. Our keynote speakers who made the event even more intellectual, please welcome Professor Dr. Anup Shukla. Please welcome our next keynote speaker, Professor Dr. Anup Kumar Verma. Big round of applause. Now, I request Chairman Sir to kindly felicitate our session co-chairs. I would like to call our session co-chair, Engineer K.R. Sharma, Head Department of Mechanical Engineering, YCET. It's not allowed, right? Our next co-chair, Engineer Rajesh Bakoda, Head Next co-chair, Engineer Lavish Talwar. Next co-chair, Engineer Anupreet, Head Department of Last but not the least, Mr. Rohit Gupta, Assistant Professor.
Thank you, everyone. They say behind every great achievement, there are those who see the potential before the results are visible. We are fortunate to have such people with us who showed trust in us and supported us. Now, let us all put our hands together for the sponsors of today's event. Without their support, this event would have not been possible. So it's our privilege to facilitate them. I would request German sir to facilitate them with a token of love and appreciation. Our first sponsor is Innovation. Innovation is a pioneering technology and innovation platform focused on delivering intelligent tech solutions in the domain of AI, data science, research, and engineering technology. I would like to request the representatives to kindly come on stage. नहीं अच्छा अंदर जाना Our next sponsor is Polyskills. Polyskills is a private ITI located in Gurugram. It is in collaboration with KVIC. It is a vocational training that provides technical and workshops and certifications. Our next sponsor is Shalimar Kettle Feed. Shalimar Kettle Feed, located in Badi Brahmana, is a non-government organization specialized in high-quality nutritious feed for livestock. I request somebody to kindly take the microphone this time. Our next sponsor is representative of Swastik Hotel. Hotel Swastik is a popular hotel among the tourists, not only for its ambience, but also for its quality and food. It has the first vegetarian kitchen known as Krishna Food. As their representative is not present here, so on behalf of Swastik Hotel, I would like to call Engineer Ayushi Tandon to assess the Our next sponsor is Krishna Decorator from Akru, but unfortunately he is not available today. So I would like to call Engineer Nishant Kumar, Assistant Professor.
Now, the memento goes to Birla Ultratech, the flagship secret company of Aditya Birla Group. Last but not the least, our media partners, JK Media, who govern us throughout the Thank you so much for your love and support. We are highly grateful. अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता. Today we are fortunate enough to have with us a dynamic personality whose experience and wisdom inspire man. जो ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े हैं. I would like to invite our esteemed chief guest, Shri Ravindra Rana, senior leader and national executive member visiting, who is known for his dedication towards public service. आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व की बात है. कृपया जोरदार तालियां. ये देखो पहला गैस से शुरू कर है जब व्हाट्सएप कॉलेज तैयारी कॉलेज के दिन मुझे याद आ गए असली से चली बड़े पगी The most respected chairman of this Dogananda College of Engineering and Technology, Engineer Vidhi Singh Jamwal Sahab, the worthy SDM Jammu North Deepak Ji, the director of this prestigious institution, Shri Professor Sanjeev Singh Ji, very revered personality Dr. Anup Shukla Ji, who's the Dean Academic Affairs IIT Jammu, and Professor Verma Ji, very revered educationist Dr. Renu Ji, Shivdev Singh Jamwal Sahab, Sri Omi Khajuria Sahab, Anup Ji, all respected HODs, all the faculty members, and very dear students. I've been really privileged in participating this concluding ceremony of the conference, third international conference, RISET 2026. Though I have a very busy schedule, and when I was asked to come in this final function of this conference, I felt so happy. I left all my assignments scheduled for today. I came in this institution. I was just hearing some of the professors, and while sitting on dais, I was discussing with Dr. Saab and Engineer Jamwal Saab.
And while sitting on the dais, I was recalling my days of college and when I was the student of law school, University of Jammu. Sir, whenever I see somebody rising to top in education, in technical education, in technologies, engineering, I always felt very happy. I always felt proud of all those who are getting the very top position in education, in technologies. Reason is, जो कुछ भी हमारा contribution आज है. I just heard one of the professor, HOD साहब, जो physics के लिए आए थे यहाँ, 90 papers he submitted, 90 papers. तो मैं स्टेज के ऊपर था तो मैंने इनको I simply asked him 90 papers. ये आपका एज कितना है? 90 साल लग जाएंगे. हमारी it was good luck to me कि my father is a teacher, very dedicated teacher. All my teachers from those मुझे उनसे स्टडीज का मौका मिला, बहुत अच्छे टीचर्स. एक कोट हम पढ़ते थे, टीचर्स आर द नेशनल बिल्डर्स. राष्ट्र निर्माता होते हैं टीचर्स. वो कैसे होते हैं? जब ये स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़ते थे उस वक्त शायद इसका अनुभव नहीं होता, लेकिन आज हम जब इस सारे फील्ड में हैं तो हम महसूस करते हैं कि कैसे टीचर्स जो है वो नेशनल बिल्डर्स हैं. चाहे वो योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हों, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में हो या प्राइवेट में, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल. Once I was when the student of Jammu University, I participated in a conference where head of the department mathematics, Professor Jammu sir, now he is retired. While delivering his lecture, he told a very wonderful story. The story was his grandson went to a private school, Kidsy. His teacher, in a hurried manner, जल्दी में होंगे, उन्होंने ब्लैक लड़के ने लिखा 2 2 r, तो आगे भी उसने 2 लिखा था, 4 नहीं लिखा, 2 2 r 2 लिखा. तो जो उसकी मैम थी किड्सी स्कूल में, उसने जल्दी में टिक मार दी. यस, the HOD of the mathematics, who's head of the department heading the Jammu University, when returned to his home and while checking out the notebooks of his grandson, he said, "Oh, यार क्या तुम्हारी मैम है, नालायक, ये 2 2 और 2 नहीं 4 होते हैं." और उन्होंने प्रोफेसर साहब ने हमें क्या बोला? उन्होंने बताया, मेरा ग्रैंडसन मुझे कहता, दादू शट अप, माय नेम इज नॉट इलिटरेट, यू आर इलिटरेट. ये आपने इसको इनसर्कल क्यों किया है? और उसने अपने दादू के साथ लड़ाई की. उसके लिए उसकी मैम जिसने उसको पढ़ाया है वो ठीक है, वो क्या जाने जम्मू यूनिवर्सिटी के HOD मैथमेटिक्स जम्बाल साहब. इतना फेर एक स्टूडेंट का अपने टीचर पर, और ये होना चाहिए, इट शुड बी. उसके बाद ही टीचर को नेशनल बिल्डर कहा जाएगा जब उसका कंट्रीब्यूशन होगा. अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में, इन दिस प्रेजेंट एरा, वो वैल्यूज एजुकेशन में बहुत कम है. एजुकेशन जो है, very famous English writer John Ruskin, when once I was reading his book, there was a famous quote we used to read out in school colleges.
Education does not mean teaching people to know what they don't know. It means teaching people to behave as they don't behave. It changes the curriculum of the student. It makes the man perfect. जिसको हिंदी में कहेंगे व्यक्ति निर्माण। व्यक्तियों का निर्माण क्वालिटी एजुकेशन से होता है और क्वालिटी एजुकेशन देने वाला टीचर जस्ट लाइक ए सेंट एक फकीर होता है, एक सन्यासी होता है जो कि बहुत मेहनत करके अपने उस मुकाम को समाज में हासिल करता है। हमारे सामने बहुत शिवदेव साहब बैठे हैं और बड़े, मैं देख रहा था एचओडी साहब शर्मा साहब जब यहाँ आए, कितना वेलकम, कितना रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया। Not only to the Sharma sir, each and every HOD who visited this twice was given warm welcome. This shows, and I was just feeling कि इन तालियों के पीछे बहुत तपस्या है, बहुत तब जाके ताली बजती है, वरना ताली है। हम देखते हैं अब जब हमें यहां बुलाया गया, जम्बाल साहब ने कहा कि आपने प्रोफेसर्स, डीन्स, डायरेक्टर्स, एचओडीज, क्या क्या इंजीनियरिंग स्कॉलर्स और 75 पेपर्स यहां प्रेजेंट किए गए। सम ऑफ दोज वर फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, युगांडा, ईरान, कहां से। यहाँ बहुत सारे अदर स्टेट्स के भी हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आए, वो जरा हाथ खड़ा करो। somebody from अच्छा वो ऐसा रही है जम्मू नहीं है सर, शायद समझा दे। तो मैंने सोचा भाई इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, जिन्होंने रिसर्च की है, भाई उनके सामने जाके हम क्या बोलेंगे? सर हर डिपार्टमेंट पहले ही बदनाम है, पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट। एक बार मैं असेंबली में जब एमएलए था तो मैंने एमएलए को बोला, मैंने कहा आज ये कैमरा और ये सारा बंद करो मीडिया। मैंने सारी आख्या मैं सबको बोला कि हमें भी समाज के अंदर कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं, खाली भाषणबाजी से काम, ताकि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, डिमांड नहीं की जाती। कमांड द रिस्पेक्ट, नेवर डिमांड द रिस्पेक्ट। कमांड तब करोगे जब समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन। योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर संजीव सिंह जी ने जब सारी चीजें बता रहे थे कि 2013 से सिर्फ 12-13 सालों के अंदर जो मुकाम आपने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चार चांद लगाए हैं, इसके लिए आपको और आपकी सारी मैनेजमेंट को, सारे फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता यहां जो बैठे हुए स्टूडेंट्स, they are not ordinary students, they are not just school going or college going students, engineering students। आपका बहुत बड़ा रोल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर आदमी का कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशन जरूर होना चाहिए। हमने अपने देश के लिए क्या किया, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार भारत के एक बहुत बड़े संत स्वामी रामानुजाचार्य जापान के अंदर, क्योंकि वो व्रत रखते थे, उपवास करते थे, फास्टिंग करते थे, एक रेलवे स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, he was in search of some fresh fruits, कि उन्हें कुछ ताजे फल मिले। वो अनाज नहीं खाते थे और एक जगह उन्होंने अपने साथी को बोला, what hell is जापान? कैसा देश है? इस जापान के अंदर फ्रूट्स नहीं मिलते। अगले स्टेशन पर जब रेलगाड़ी रुकी
उनके बगल में बैठा एक जापानी, सिटीजन ऑफ जापान, बहुत जल्दबाजी में वो रेल से उतरा, मार्केट गया, एक टोकरी भर के फ्रेश फ्रूट्स के लेके आया और स्वामी जी रामानुजाचार्य जी को वो जो बास्केट थी ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। अच्छा लूंगा तो आप पैसे ले लो, उनका लो, मैं नहीं लूंगा। उनका रीजन, यू आर नॉट माय फॉलोअर, आप मेरे शिष्य नहीं हो, यू फॉलो द बोथ धर्म, आई एम हिंदू। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा, वो जो जापान के, ये समझने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा आपने अपने साथी को बोला व्हाट हेल इज जापान, यहां फ्रूट्स नहीं मिलते। मेरे देश की इंसल्ट। जब आप यहां से भारत जाएंगे, whenever you go back to India, while discussing, delivering sermon, lecture, never say Japan is a country where fruits are not available. हमारे देश की बदनामी हो जाएगी, मेरे देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये फ्रूट्स लेके आपको देता हूं, मैं इसके आपसे पैसे नहीं चाहता। ये जज्बा हमारे अंदर अपने देश के लिए होना चाहिए। हम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, जो भी बने, लेकिन हमारा हर एस्पेक्ट, our each and every step aim for the betterment of this great nation that is called Bharat, our mother. The only country in the world. Whenever we used to talk about our ancestors, महापुरुषों की बात जब हम करते हैं, we talk about nationalism. We should talk about cultural nationalism. जो हमारी जनरेशंस पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों से चलता आया नेशनलिज्म है। भारत की आत्मा कल्चरल नेशनलिज्म में है। हमारे ऋषि मुनियों ने, all our great our saints, they were actually great scientists. जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये जो आज आपको जहाज नजर आते हैं, मत सोचो कि ये आज के दौर में बने हैं। किताबों में पढ़ाया गया एरोप्लेन किसने बनाया? अर्विल राइट एंड विल्बर राइट, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, राइट ब्रदर्स। कब बनाया? 1920-22 के आसपास, 25 में बनाया। सवाल ये है, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रावण आया, कुबेर का जहाज, रावण का जहाज किसने बनाया था भाई? कोई राइट ब्रदर्स के दादा ने बनाया? नो, ही वाज महर्षि भरद्वाज, जिन्होंने ये एरोनॉटिक्स, एरोसाइंस उन्होंने डेवलप। एटम किसने बनाया? Who invented the atom? किसी को पढ़ाया गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। किसी को बताया, आप हजारों लाखों साल पहले के इतिहास में चले जाओ, हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीजें इजाद की। ये रेडियो कम्युनिकेशन किसने बनाया? बोला इटली के मार्कोनी ने बनाया। नो, जगदीश चंद्र बसु ने बनाया। आज इटली ने इस बात को माना है कि ये भारत की देन। ये टेलीकम्युनिकेशन, ये आज से युगों युगों से ये चीजें भारत देश के अंदर चलती आई है। किसी जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला होते थे,
लेकिन भारत को डाउनग्रेड करने के लिए हमारे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया गया। ये जो 200 साल की गुलामी रही, इस गुलामी ने भारत की मानसिकता बदली, हमारे नौजवान पीढ़ी की सोचने की वो क्षमता बदल दी, जिससे हमारे उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कल्चरल नेशनलिज्म को बड़ा धक्का पहुंचा। बट स्लोली एंड स्टडीली अब आज हम देख रहे हैं कि भारत की युवा पीढ़ी, हमारे देश का जो जेनजी है, वो वापस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब दुनिया के किसी भी देश में कोई हिंदुस्तानी होगा, अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, वो भारत के लिए सोच रहे हैं। तो दुनिया के दूर से दूर के देशों में बैठ के अपने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की सोच रहे हैं। विश्व गुरु कोई मार धाड़ का नहीं, विश्व गुरु नॉलेज, विश्व गुरु जो थीसिस आपने यहां प्रेजेंट किए हैं, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, योर्स कंट्रीब्यूशन फॉर दिस नेशन एज यू आर स्टडीइंग, गेटिंग एंड इवॉल्विंग न्यू एस्पेक्ट्स, न्यू थिंग्स, साइंस की नई टर्मिनोलॉजीज आप निकाल रहे हैं, नई चीजों को आप इन्वेंट कर रहे हैं। आपके इस कंट्रीब्यूशन को भी याद किया जाएगा, इसका बेनिफिट देश को। इंजीनियर की अगर बात करते हैं तो दो ही चीजें याद आती हैं, सड़क बनाओ तो बिल्डिंग बनाओ। ये यहां तक महदूद नहीं। आई वाज जस्ट इंक्वायरिंग फ्रॉम द प्रोफेसर इंजीनियर जवाहर साहब, when I heard about the robotic laboratory in this Yogananda, I said, is it sir? Yes, we have robotic laboratory है। आज जो टेक्निक्स इंजीनियर्स की जो देन है, जो नई मशीन्स, नई टेक्निक्स निकल के आ रही है, अगर साइंस सर्जरी करती है, टेक्निक्स, मशीन सब इंजीनियर्स की बनाई हुई, इंजीनियर्स की बनाई हुई मशीन के ऊपर काम होता है। आज अगर एआई डेवलप हो रही है तो टेक्निक सारी इंजीनियर्स की है। युग बदल रहा है, बड़ी तेजी से बदल रहा है। ये एआई जो है, इंडिया has organized an AI summit 2 months back at New Delhi Bharat Mandapam. I myself and the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, we were invited in that Bharat Mandapam AI summit. I was astonished. American companies, Japanese, Germans, French were there. आने वाला समय टेक्नोलॉजी, इसीलिए इन इंजीनियर्स की जिम्मेवारी, आपने वर्ल्ड लेवल के उस कंपटीशन को कंपीट करना है, देश को, भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मैं आपके इस 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रीसेट 2026 को बहुत सक्सेसफुली आपने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, और मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया है। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your valuable words. As we approach the conclusion of this wonderful event, it's the time for the vote of thanks. This is the moment to express our heartfelt gratitude to everyone who has contributed to making this event a grand success. I would like to invite Engineer Lavneesh Talwar, Joint Secretary, RISET 2026, to kindly come on the podium and deliver the vote of thanks. I may request everyone to welcome him with a big round of applause. Respected Chief Guest of the day, Shri Ravindra Energy, Senior BJP Leader and National Executive Member of BJP. Esteemed Guest of Honor, Dr. Deepak Kumar, JKS SDM, Jammu North, worthy Chairman Sir Engineer Viri Singh Jambalji, respected Director YCET, respected Keynote Speaker Dr. Arun Kumar Verma, IIT Delhi, respected Dr. Anup Shukla, IIT Delhi, Professor Jia Dotra Sir, worthy Vice Chairman Thakur Shivdev Singh Jambal,
Worthy Managing Director, Engineer Rinku Mahu ma'am, session chairs, sponsors, esteemed members of organizing committee. A very good evening to all of you. It's an honor and a pleasure to give a formal vote of thanks on the behalf of organizing committee for the third international conference, RISET 2026. At the outset, I offer my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest for the day, Shri Ravinder Rana ji, for graciously accepting our invitation and inspiring us with the words of wisdom. Sir, your presence has greatly enhanced the prestige of this conference and inspired young minds. I extend my sincere thanks to the guest of honor, Dr. Deepak Kumar, for sharing your valuable insights and encouraging a culture of research, innovation, and academic collaborations. I would like to express our profound appreciation to our visionary leadership, our worthy chairman, Sir, Engineer V.C. Jambal, sir. Sir, your constant encouragement, dynamic leadership, and unwavering support have been the backbone for the successful event for this event. I would also like to express my sincere thanks and gratitude to the worthy director YCET for constant guidance, encouragement, and support and extending throughout the organization for this international conference. Our sincere thanks to the Vice Chairman Dr. Shivdev Singh Jambal sir for their valuable encouragement and support, which have greatly contributed to the success of this conference. I would also like to thank the Managing Director, Engineer Renu Panku ma'am, for continuous support for this event. Ma'am, you are truly appreciate your valuable guidance at every stage of the conference from planning to the execution. Your support has not only strengthened this event but also motivated us to make this event a grand success. My sincere appreciation extended to all the members of the organizing committee from the institution across the country and abroad. We sincerely thankful and acknowledge invaluable contribution to all our technical partners, collaborators, sponsors, media houses, keynote speakers, whose support and cooperation have been instrumental in the remarkable success for this conference. Your partnership, encouragement, and commitment, whether direct or indirect, have significantly strengthened our efforts and made this event a truly grateful. In the blast, the word by Dr. APJ Abdul Kalam, dream is not that which we see while sleeping. It's something that does not let you sleep. May the ideas and the discussion from this conference become those dreams that keeping us innovating and achieving. Together, let's contribute to push the boundaries, explore new horizons, and contribute to the building a better, technological, empowered, and sustainable future. Once again, I extend my heartfelt thanks to each one of the who be present there for to make this event a grand success. Thank you and have a nice day. Thank you, sir. Now, as the session is over, it's my humble request to our honorable chief guest, Shri Ravinder Rana, to officially close the international conference. Thank you, sir. Thank you. I hereby declare the third international conference, RISET 2026, officially closed.